हेलो सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ मैं ਐਸ਼ਲਿਨ वर्मा एंड पहली वीडियो नंबर 1 साडी वेब सीरीज़ तो डिस्कशंस ऑफ रीडिंग्स। बेसिकली टुडे आज आप पैसेज पकड़िया है विलियम गिलबर्ट एंड मैग्नेटिज्म। आई विल अपलोड द फोटो इफ यू कुड सी दिस, दैट्स वेरी गुड। सो आज आप इस रीडिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिस्कस करांगे एंड बेसिकली ये क्वेश्चंस ਨੂੰ फॉर्म आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द रीडिंग की रीडिंग बेसिकली ये क्वेश्चंस की है। सो इफ़ यू लुक एट द रीडिंग नॉट अ वेरी बिग पैसेज, बहुत ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं है, बट देयर आर मल्टीपल पैराग्राफ्स टू इट। सो वी कैन सी द पैराग्राफ A to G एंड ओके साढ़े पहले 7 क्वेश्चन जोड़े है दैट इज़ अ पैराग्राफ हेडिंग। ओके नाउ पैराग्राफ हेडिंग यूजुअली काफ़ी स्टूडेंट्स इट्स लाइक टास्क टू डू, बेसिकली बहुत डिफिकल्ट होंगी उन्होंने बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इनू गलत तरीके नाल करते हैं। वी विल गो थ्रू टुडे कि साडी रीडिंग की टेक्निक की होनी चाहिए एंड वी विल फाइंड आउट एंड वी विल सी कि आप कितना क्विकली टैकल आउट करते हैं। सो द फर्स्ट 7 क्वेश्चन इज पैराग्राफ हेडिंग एंड द नेक्स्ट 3 आर ऑफ ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन एंड द क्वेश्चन नंबर 11 to 13 is an MCQ. Let's go through that and let's find out what is C. Okay, so जो भी paragraph heading question I don't want you to look at the list of headings. First of all, I want you to see the paragraphs. So आप paragraph read करेंगे and we will try to predict what is the meaning or what is the scenario behind it. So in the paragraph A, if you see the very first line, okay, now the paragraph headings पढ़न लई की ज़रूरी है, आप ओवरऑल कंटेक्स्ट करना है। सो इन द फर्स्ट लाइन यू और इन द फर्स्ट सेंटेंस यू मे से you can observe that it is written that the 16th and the 17th centuries saw 2 great pioneers of modern science, Galileo and Gilbert. Okay, so the paragraph the बड़ा first sentence that is a topic sentence उन्हें clear किया कि 16th and 17th century दे विच 2 pioneers of modern science आए, Galileo ते Gilbert। ते then the next it is being talking about the impact of their finding or the findings, it was eminent, first modern scientists see. So it is basically talking about the people or we can say the pioneers of that modern science. So now after to see अपने mind ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हों context कर लिया, we will go through the list of heading and we will see what is the best suitable heading for this. So if you go through the list of heading and if you check the heading number 5th, that is the pioneers of the early science, is the most suitable because it is clearly stating क्योंकि इस पैराग्राफ वो बंदियां बारे गल करता पिया सी तां करके इहदा हेडिंग pioneers of early science आया, not just because of the keyword but throughout the paragraph वो 2 pioneers बारे गल हुई है। एंड मैं तुहानूं चाहना कि आप इस पैराग्राफ में नॉट जस्ट इत्थे खत्म करो, इस पैराग्राफ में फुली रीड करो एंड इफ यू आर फुली रीडिंग इट टूवर्ड्स दी एंड तुसी एक लाइन चेक करोगे जिहदे विच लिखिया गया हाउएवर ही इज़ लैस वेल नोन दैन ही डिजर्व, कि वो घट उन्होंने की कहते उतना प्रसिद्ध नहीं होया जिन्ना कि उन्होंने होना चाहिए सी एंड हैंस इट फॉर्म्स आर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ही इज़ लैस फेमस दैन ही शुड बी एंड द आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एंड इफ़ यू सी कि जो अगर तुसी इस तरीके ना अगर रीडिंग करते हो कि जेडे पैराग्राफ दे विच 2 आंसर्स इकट्ठे लोकेटेड है, यू फाइंड दैम एट वंस, so you saved your time, just time ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ क्वेश्चन करना सी, now you have done 2, so it's a congrats for you and you are more sure about it. Similarly, let's go through the paragraph B and let's try to understand what this paragraph is stating about. If you read the very first line, this is quite easy reading. I can see from what I can observe is the answers are very much visible from the very first sentences. So Gilbert's birth predated Galileo. सो ये ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है कि गिलबर्ट का जोड़ा बर्थ से प्रीडेटेड होया, दैन उस तो बाद अगे उसकी हिस्टरी दसी जा रही है, बॉर्न एक लोकल फैमिली बॉर्न होया, इन्नी डेट में बॉर्न होया, ग्रामर स्कूल गया, मैडिसन स्टडी की उन्हें, ग्रैजुएट होया 1573 दे विच, उस तो बाद ट्रैवल किया कॉन्टीनेंट ते लंडन दे विच आके सैटल हो गया। सो बेसिकली इन्हें ये थोड़ा जिहा बैक डेट हिस्टरी के बारे दसिया। सो इफ यू सी
from this the very first heading, that is early years of Gilbert, yes ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ, early years ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ grammar school ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿੱਥੇ ਬੌਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਆਬਵੀਅਸ ਆਂਸਰ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਆਂਸਰਸ ਫॉर्म ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਾਈਂਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਕੁਡ ਆਂਸਰ ਬਾਈ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। Now let's jump to the third, that is a C paragraph, and again read it very carefully, and if you read, he was a very successful and eminent doctor. Now he ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, that is ਪਿਛਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਲਬਰਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਲਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਰਾਇਲ ਸਾਇੰਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕੁਈਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਾਈਟਡ ਉਹਨੂੰ ਔਨਰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਈਨ ਬਾਰੇ, मतलब वो गेट टू नो लोगों ने जाना शुरू किया, उन्हें सर्व किया, पर he didn't outlive the queen for long and died on November this and few months his appointment as personal physician to King James। उस तो बाद जो King James का personal physician बन गया। So if you see in the paragraph C, basically वो profession बारे गल की गई है, तो उन्होंने recognition वो कितना होनी शुरू हुई है। So if you see over here, if you look at the list of heading number 6, that would be the most appropriate because this is stating that professional and social recognition उस बंदे दी उहदे विचों known होना शुरू होया। I'm so sorry, I got a little off track over there। Okay, so these videos are very raw guys, I'm not editing it, it's very basic, straightforward, like a live discussion you might have over there। Let's look at the D paragraph। Okay, first of all, before moving to D, if you can read the second, or not the second but the third sentence in the C paragraph, it is stating that he was also appointed personal physician to the queen, and now if you read the question number 9, he was famous as a doctor before he was employed by the queen। So if you see, he was also appointed personal physician and he was a famous doctor, what you can say, yes he was, because in the very first line it was stated yes। So the answer for this became true also, so sorry। Then jumping to the next one in the D paragraph, if you see, Gilbert was first interested in chemistry but later changed focus due to the large portion of mysticism of alchemy involved, such as the transmutation of the metal। So अगर ये विच देखो तो इंटरेस्ट के बारे दसिया गया कि पहला उनको केमिस्ट्री पसंद सी, then he liked something else, वो ट्रांसपोर्टेशन दसी जा रही है, वो इंटरेस्ट अगे फिजिक्स डेवलप होया, वो विच like it is telling you about the transition of his like interest, or पहला physics chemistry फिर physics then forward, and if you go on reading the whole paragraph is stating about that। So the very like obvious would be his change of focus, that is list of heading number 10। Jumping to the ਆਪਾਂ A ਤੇ आइए ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, if you read the first two sentences, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ sentences ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ read ਕਰੋ, Gilbert discovery was so important to modern physics कि he investigated the nature of magnetism and electricity, he even coined the term। ओके ना हुन इस पैराग्राफ दे विच उन्हें शुरू किया ਉਹਦੀ डिस्कवरीज बारे दस्या जा रहा कि उन्हें मैग्नेटिज्म डिस्कवर किया, उन्हें इलैक्ट्रिसिटी डिस्कवर किया, उन्हें टर्म कॉइन की। सो ऑल ऑफ दिस इट इज़ बीइंग स्टेटिंग अबाउट। सो इस पैराग्राफ में अगर मैं हेडिंग देनी हुई, दैट वुड बी अबाउट हिज डिस्कवरीज। लेट्स सी, यस द वेरी ऑब्वियस, द लिस्ट ऑफ हेडिंग नंबर 9, हिज डिस्कवरी अबाउट मैग्नेटिज्म। सो दिस पैराग्राफ इज अबाउट दैट। And if in between, if you jump somewhere around, okay, if you read from one example being that sailors even believe the smell of garlic would even interfere with action of compass, which is why helmsmen were forbidden to eat in an airship compass। Gilbert also found that metals can be magnetized by rubbing materials such as fur or plastic or like on them। So if you see, that would be the answer to the 11th question। So discovery the part की सी। So basically आह वाला question तो नोइदे विच मिलना ही मिलना सी, because वो paragraph discovery बारे है। So the very obvious would be that metals can be magnetized। So the 11th answer ਆਪਾਂ C mark कर सकते हैं थे। Jumping to the next one, अगर ਆਪਾਂ F paragraph देखिए, he also questioned and the traditional astronomical belief। उन्हें हुन उदा आया कि उन्हें contradiction की थी, he gave a contradiction, he raised a question about that।
सो बेसिकली उस बारे ही अगे गल की गई है, उस क्वेश्चन के बारे ही दसिया गया कि वाई ही रेज्ड इट एंड हाउ ही बिलीव्ड और डिड नॉट बिलीव्ड इन अदर थिंग्स। सो इफ एफ नु मैं अगर देना हो हेडिंग दैट वुड बी समथिंग अबाउट क्वेश्चनिंग एंड येस वी हैव द फोर्थ वन दैट क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट हेडिंग टू दिस वन। एंड इफ यू रीड दिस पैराग्राफ, इफ यू रीड फ्रॉम दिस लाइन, अगर तुम वाली लाइन रीड करो, however he believed that stars are not equidistant from the earth but have their own earth like planets orbiting around them। उन्हें कहा कि स्टार्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ अर्थ ਤੇ, बट ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ अर्थ ਲਾਈਕ ਪਲੈਨਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਅ ਡਿਸਕਵਰੀ दैट ही formed that stars are at different distances from the earth, which is very appropriate to say so। ਸਾਡੇ ਕੋ 12वें ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। इस तो अगला पॉइंट अगर तुम रीड करो, दे स्पिन ऑन एक्सेस, मतलब इस तो एक सेंटेंस छड़ के अगे है, दे स्पिन ऑन एन एक्सेस दैट इज़ अलाइंड विद अर्थ्स पोलैरिटी, कि वो स्पिन करते हैं सेम एक्सेस से जी अर्थ की पोलैरिटी के नाल अलाइन है। सो इफ यू सी दैट वुड बी द आंसर टू द 13 that they spin on axis that is aligned with the earth's polarity। Okay, now last but not the least, so his research method was revolutionary in that he used experiment rather than pure logic and reasoning like that in ancient Greek philosopher did। so इस रिसर्च मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀ based on history ਕੀ ਇਵੋਲਵ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। So if I look over here now, all of the headings are being marked, if we see very few are left, so which is the most appropriate was what was the new about his scientific research method, or which nama ki si past de naal compare karke unne dassiya। so that is your answer to the 7th question। So guys, this is a good way to solve the reading if you want to do it। you read one paragraph, you understand the concept, and if you look काफ़ी छेती सानू इस तरीके नाल solve होया। of course this comes with the practice, but again अगर तुसीं इस तरीके नाल practice करदे हो तुसीं upgrade करदे हो अपने skill ਨੂੰ rather than just question find ਕਰਨ ਦੀ technique ਨੂੰ। so I hope that कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ passage ਦੇ answers समझ लगे होंगे। drop your queries if you didn't get any part, appreciate to help that all the time। and again this is the reading, I will share the link to download this passage so you can do it also। and for the time being, peace out।